होते हैं टॉक्सिक, Ordinary people, हाँ लोग obviously. टॉक्सिक होते हैं. आई बिलीव इन गिविंग एजेंसी टू एवरीवन, व्हिच आई विल डू इन माय फिल्म्स, बट आई कांट टेल यू हाउ टू मेक योर फिल्म. So I just thought that ये mass है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा? So I was like, I know what he's trying to make. Now it's just me submitting myself and trying to fit into this thing and my craft, you know, serving that sensibility. No comedy without offense. I like dark jokes. That's very true. I like I know. dead baby jokes. और ग्रे कैरेक्टर में समझ हीरो कभी नहीं मिलेगा. मैं हीरो बनाते नहीं हूँ. That's very true. And आदमी हीरो अपने काम से बनता है, एंट्री से नहीं बनता. That's how I see cinema. You're watching me on Pop Diaries channel. I'm in conversation with two very eccentric people. They have a lot more in common actually. One is very creatively an ace director. I can very well say कि उन्होंने anti-heroes को glam up किया है हमारे लिए. He's made us want to watch them more and more. So he's the OG anti-hero creator. So yes, definitely. You know what I mean. And the other one, well, I am mad over all the shades he has to show us on screen, but he simply makes us want to watch him in every shade, be it grey, dark, anti-hero, black, white, कुछ भी हो, हमें मजा आता है उनको देखने के लिए. And with me in conversation is none other than Gulshan Devaya and Anurag Kashyap, only on Pop Diaries. Welcome. Wow. अरे इनकी छोड़िए ना, मेरे बारे में और बात कीजिए ना. अच्छा लगा था. इनके shades are sponsored by Ray-Ban. अच्छा, there's one more thing common in between the two of us. Okay. Kalki ke Kalam. We both are friends with her now. है ना? Okay. But you know, the moment I saw the teaser for Bad Cop, one thing जो मुझे बहुत ज़्यादा interesting लगा is कि you're someone who's always directed movies. You know, बहुत कम you've come in front of the camera. But ऐसा कभी हुआ है where you felt, and also of course you've made villains, and there have been some very dark villains out there that you have created. Did you ever feel कि I am doing a villain now in somebody else's, you know, project? ऐसे डायरेक्शन का अंदर से कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं इसको इस तरह से करते हैं वैसे करते हैं? वो कभी नहीं हुआ. आई थिंक मेरे साथ मेरे अंदर का डायरेक्टर जो है जागता है तो उसको मैं मार देता हूँ. मैं इसलिए सेट से बाहर रहता हूँ. Okay. हाँ, बस एक ही इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ लाइफ में. एक बार साउथ में एक बार कर रहा था जब मेरे को लगा कि ये आदमी क्या कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है और मैं क्यों यहाँ पे हूँ. अच्छा. And then you started directing. No. Oh, अच्छा. I had to kill it, step back, keep quiet, And just do mind what my he own says. business. Wow. Because I was there as an actor. Yes. मैं जो काम करने जाता हूँ उतने में ही सीमित रहता हूँ. और Wow. जनरली हाँ. That's really commendable क्योंकि I mean it's a human nature at the end of the day. So नहीं, अगर नहीं, वो हो ऐसा भी कुछ जाए तो you know. See, directing is directing. I don't play a director. 60% लोग ना सेट पे डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं. I direct and you can direct quietly. So मेरे सेट पे भी मैं पता ही नहीं चलेगा. मेरे सेट पे किसी एक्टर को पूछोगे या कि कोई भी काम करता है तो लोग बोलते हैं तो कुछ करता ही नहीं है. मैंने आज तक किसी एक्टर को नहीं बताया कैसे एक्टिंग करनी है. Wow. आज तक लाइफ में किसी एक्टर को नहीं बताया कैसे एक्टिंग करनी है. बट एक्टर्स ऑलवेज गिव देयर बेस्ट टू मी बिकॉज आई गिव देम स्पेस and I give them And you trust. I trust them, I empower them, I give them space and people bring their best in my film. Literally मुझे देख शाजिया इकबाल करके एक डायरेक्टर है जिनकी फिल्म आ रही है धड़क 2. उनसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आप प्रोडक्शन डिजाइनर से डायरेक्टर कैसे बन गई. तो उसने बहुत सिंपल सा जवाब दिया था. उसने कहा मैं प्रोडक्शन डिजाइनर थी, मुझे लगता है डायरेक्शन बहुत जो है बहुत कुछ फाड़ू काम है, तोड़ फोड़ वाला काम है. फिर मैंने मुक्काबाज किया अनुराग के साथ. मैं कहा ये तो कुछ करता ही नहीं है, डायरेक्शन इतना सिंपल है. एंड उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं डायरेक्टर बन गई. Wow, super. Okay, over मैं to भी you. सोच रहा Gulshan. हूँ डायरेक्टर बन जाऊँ. इतना सिंपल है. Wow. You just have, जैसे कि अनुराग ने पहले इंटरव्यू में कहा था, you just have to cast right. एक बार आपकी कास्टिंग सही होगी तो फिर But क्या है? casting is 50% फिल्म मेकिंग. That's very true. Then very बाकी 50% डीओपी और एडिटर देख लेंगे. हाँ एक्चुअली हाँ, और बाकी 100% प्रोड्यूसर देख लेगा. डायरेक्टर को पीपल मैनेजमेंट आना हम तो चाहिए. मेरे को खाली ये करना है बस. Okay, over to you, Gulshan. You've played so many various characters on screen. What makes Bad Cop
very different, like 180-degree different from all the characters that you've played, especially as someone who's doing a double role as well. What made it so interesting for you to choose it? It was fun. It's more fun. I think it's the funnest part that I've done so far. बहुत मज़ा आया मुझे स्क्रिप्ट तैयारी करते हुए और इसको शूट करते हुए. सिर्फ एक्शन करते हुए भी मज़ा आया था, भागते हुए इतना मज़ा नहीं आया था, बट इट्स जस्ट फन. इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ डबल रोल. साउथ में एक वर्ड होता है ना, साउथ में सब लोग बोलते हैं मास. मास. Mass. ये मास Yes. सीरीज, Mass ये सीरीज जब entertainment. तो मास है. जब मेरे पास लेके आए थे फ्री मेंटल के ऑफिस में बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं, लीना जी, अनुराधा जी और आदित्य जी, उन्होंने कहानी सुनाई मुझे, एंड रेंसिल डिसिल्वा हैज रिटन द स्टोरी. सो आई जस्ट थॉट दैट ये मास है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा. दैट वाज रियली समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग टू मी. एंड आदित्य के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ मैं कमांडो 3 में. सो आई न्यू हिज सेंसिबिलिटीज़ कि ये आदमी कैसे इस चीज़ को बनाएगा. एंड ही इज़ वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स टू मेक. He wants things to be entertaining and cool and nice. He wants people to like it. There is nothing else that his stories are trying to say. And he's very honest and upfront about it also. So I was like, I know what he's trying to make. Now it's just me submitting myself and trying to fit into this thing and my craft, serving that sensibility. And it's going to be a lot of fun. That was the main criteria कि अगर मुझे करते हुए मज़ा नहीं आता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता. But I knew that this was going to be fun, and I really enjoyed, and he allowed me the space to be creative and like bring some elements of my own into it, and I got to spend a lot of time with him, which was also fun, just chatting, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था. बक की हमने. हाँ, तो बहुत सारा अच्छा एक्शन लगा. शूट किया. अच्छा लगा. Nice, nice. Over to you, Anurag sir. As a director, I always feel that when you're creating anti-heroes, and as I said, even during the start, being Gangs of Wasipur, you've made us want to watch more of anti-heroes. But as a director, where do you think you should always draw a line of morality, even if it's about creativity flowing? I don't draw any line of morality. Yeah, like I will give you just a small example. So in a way, when we talk about films like Animal and Kabir Singh as well, what is your opinion on that kind of an anti-hero and obviously the anti-heroes that you create? I'm a person who's totally against any kind of censorship. Okay. Anything that offends me doesn't mean somebody can't do it. Okay. We have to learn to take it. We live in a world. Stand-up comedians are very offensive people. Sometimes, yeah. Not sometimes. There's no comedy without offense. I like dark jokes. That's very true. I like I dead know. baby jokes. I'm like, if I have an issue of something, I will address it with the person. Right? But it doesn't mean I can. मैं तो बोलता हूँ, मेरे को किसी चीज पॉर्न एग्जिस्ट करता है, आप क्या छुपाओगे, लोग छुप के देखते हैं, ओपन में रहने दो. I'm saying the sense of shame put in us Yes. is our biggest problem. That's very true. And that sense of shame that has been forced into us is used to control us. Okay. I'm saying लोग होते हैं toxic. Ordinary people. हाँ, लोग Obviously. toxic होते हैं. I believe in giving agency to everyone, which I'll do in my films. But I can't tell you how to make your film. Very true. For me, there's no character I treat as a supporting actor, because I feel every supporting character in their own life is the protagonist. So I treat my actors like that. Every single character, चाहे वो एक सीन के लिए क्या, वो अपनी जिंदगी का protagonist है. True. तो they're not there to support the hero. So मेरी फिल्म में आपको ग्रे कैरेक्टर में सब मिलेगा, हीरो कभी नहीं मिलेगा. मैं हीरो बनाते नहीं हूँ. That's very true. And आदमी हीरो अपने काम से बनता है, एंट्री से नहीं बनता. That's how I see cinema. So if there is a hero becomes a hero only when the story ends, because he is a hero of his own life. So that's how I look at things. और मुझे किसी चीज़ से कुछ ऑफेंड नहीं होता. अगर बुरा लगता है तो मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ. Wow. Okay. To the both of you, last, because we have a very very small time. I mean, बहुत कम time है. Sorry, बहुत कम time है. So last question: have you guys ever been a bad cop in anybody's life? Ever? In any? I don't think so.
Yeah. नॉट मी। No? मैं तो बहुत जब अच्छा आदमी जब बच्चे बड़े करते हैं तो हम लोग गुड कॉप बैड कॉप करते ही हैं। मेरे तो But बच्चे हैं generally, ही। my daughter, I was the good cop, and the one who literally brought her up and worked the hardest, played the bad cop. Was mom. I'm a little strict with my cats, but Yeah. I'm not a cop with them. No, I'm saying in terms of Good. Controlling. Completely different. हाँ तो मैं सोच रहा था वो मेरे बच्चों जैसे ही है but Okay. Okay, cool. So I hope you guys watch Bad Cop because I will be watching out for it on 21st June only on Disney Plus Hotstar. It was amazing talking to you both. Thank you so much for your time. I'm very thank you honored. for your time. thank you so much. And what will you do until then? You will like, share, subscribe, and don't forget to click on that comment. Don't forget to click on that bell icon and subscribe to our page. Don't forget to comment and tell me what you love the most about these two amazing people. And I will meet you next time. Bye.